Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of grade 7. I hope you all are fine and happy. After Eid holidays, now we'll start a lesson. I'll read the lesson, translate the lesson, and then we'll do the vocabulary and the sentences. Now we'll start our lesson. Unit 2, War and Peace. Non-fiction, The Battle of Panipat, 1526. After having subdued Lahore once more, Babur and his army marched on the capital Delhi in order to subjugate Sultan Ibrahim Lodi once and for all. On reaching the village of Panipat in the plain north of Delhi, Babur organized his forces. He quickly noticed his inferiority in numbers. He had probably only about 15,000 men, of whom only about half were fit for attack. On the other hand, Babur was a skillful strategist and he had learned valuable tactics lessons in the course of his numerous battles with the Uzbeks. वार एंड पीस यानी जंग और अमन. नॉन फिक्शन गैर असानवी अदब. द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की जंग 1526 की. लाहौर को एक दफ़ा फिर अपने तसल्लुत में लेने के बाद बाबर और उसकी फ़ौज ने दारुल हुकूमत दिल्ली की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी ताकि सुल्तान अहमद लोधी को बिलाखिर मफतूह किया जा सके. दिल्ली के शुमाल में वाक़ मैदानी इलाके के गांव पानीपत में पहुंचकर बाबर ने अफवाज को मुनज़्ज़म किया. उसने तादाद के मामले में अपनी फ़ौज कमतर महसूस कर ली. इसके पास गालिबन सिर्फ 15,000 के लगभग आदमी थे, जिनमें से सिर्फ आधे हमले के लिए मौजू हालत में मौजूद थे. दूसरी तरफ बाबर एक माहिर मंसूबा साज था और उसने अज़बकों के साथ अपनी बेशुमार जंगों में कई कीमती हरबे सबक सीखे थे. Moreover, he had at his side 2 talented Turkish gunners who had mastered the art of using cannons in warfare. The cannon, a mounted gun, was a weapon well known in Europe but not on the subcontinent. At this time, when an army's strength was in its archers, Babur was very interested in firearms and artillery and used to supervise their casting. He gave the order for all the carts, 700 of them, to be tied together with raw hide ropes to form a large defensive formation. The matchlock men and the cannons, protected by mantlet shields, took a position between the carts. Behind them were the cavalry and the archers. इसके अलावा उसके पास 2 बासलाहियत तुर्क तोपची थे जो जंग के दौरान तोप इस्तेमाल करने में महारत रखते थे. एक नस्ब शुदा बंदूक तोप यूरोप में एक मकबूल हथियार थी, मगर इस वक्त बरे सगीर में मकबूल ना थी, जहां किसी फौजी की ताकत उसके तीर अंदाज होते थे. बाबर को आतिशी हथियार और तोप खाने में बड़ी दिलचस्पी थी और वो उनके ढाले जाने के अमल की निगरानी किया करता था. इसने हुक्म दिया कि एक वसी दिफाई तंजीम बनाने के लिए 700 की तादाद में मौजूद तमाम छकड़ों में को खाम खाल की बनी हुई रस्सियों से बांध दिया जाए. बाहम जुड़ी हुई ढालों के ज़ेर हिफाजत तोड़े और दार बंदूकों वालों और तोपों ने छपड़ों के दरमियान पोजीशनें संभाल ली. इनके पीछे घोड़ेसवार और तीर अंदाज थे. Ibrahim Lodi, however, hesitated to fight despite his 1,00,000 men and his many hundreds of elephants. In order to incite his enemy to attack, Babur sent his soldiers by night to harass Ibrahim Lodi's forces. On the morning of 21st April 1526, the exasperated Ibrahim finally started the assault. He forced Babur's right wing back, but his own army was swiftly overwhelmed by the cannon fire and by the matchlock men.
drawn up in the center. Terrorized by the noise of the gunfire, the elephants stampede, making any further attack impossible. Ibrahim's forces were quickly encircled and destroyed by Babur's cavalrymen and archers. ताहम इब्राहिम लोधी अपने 1,00,000 फौजियों और कई सौ हाथियों के बावजूद लड़ने से हिचकिचाता रहा। अपने दुश्मन को हमले पर उकसाने के लिए बाबर ने रात के वक्त इब्राहिम लोधी की अफवाज को हरासा करने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा। 21 अप्रैल 1526 की सुबह को झुंझलाए हुए इब्राहिम ने आखिरकार हमले का आगाज़ कर दिया। उसने बाबर के दाएं हाथ के दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसकी फ़ौज जल्द ही वस्त में मौजूद तोपों और तोड़ेदार बंदूकों वालों के हाथों मगलूब हो गई। बंदूकों के शोर से खौफजदा होकर हाथी भाग निकले, जिससे मजीद हमला नामुमकिन हो गया। बाबर के घुड़सवार और तीर अंदाजों ने इब्राहिम की अफवाज को तेज़ी से घेरे में ले लिया और तबाह कर दिया। By midday, his camp was destroyed, although his body was not found until later. It was decapitated, and the head was brought to Babar. As a mark of respect to the dead Sultan, Babar later had a monument erected on the spot where he fell. Very quickly after the battle, Babar became preoccupied with protecting the treasures of Delhi and Agra from pillage by his own victorious troops. He sent Humayun, his son, who was only 17 years old, to Agra, whilst he himself marched on Delhi, where he had prayers read in his name in the great mosque, thereby proclaiming himself Padishah or Emperor of Hindustan. At Agra, Babar was greeted by Humayun, who presented the conqueror with a magnificent diamond called the Koh-e-Noor. The ruling family of Gwalior had given it to Humayun, and Babar recorded that a gem collector estimated its worth as the whole world's expenditure for half a day. Babar immediately refused this rich gift and offered it to the one who wanted to give it to him, Humayun. दिन के वक्त तक उसका कैंप तबाह हो गया। अगरचे उसका जिस्म कुछ देर तक ना मिल सका, उसकी गर्दन काट दी गई और सर बाबर के पास लाया गया। बाद अज़ां मरहूम सुल्तान के एहतराम की अलामत की तौर पर बाबर ने वहाँ एक यादगार तामीर कराई, जहाँ उसकी मौत वाक़ हुई थी। जंग के बाद जल्द ही बाबर दिल्ली और आगरा के ख़जानों को अपने खुद के फातेहों दस्तों की लूट मार से बचाने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया। उसने अपने बेटे हुमायूं को, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, आगरा भेजा, जबकि वो खुद ही दिल्ली की तरफ बढ़ा, जहाँ उसने जामे मस्जिद में खुतबे में अपना नाम पढ़वाकर अपने शाह हिंदुस्तान होने का ऐलान कर दिया। आगरा में बाबर का इस्तकबाल हुमायूं ने किया और फातेह को एक शानदार हीरा पेश किया, जिसका नाम कोह-ए-नूर था। ग्वालियर के हुक्मरान ख़ानदान ने ये हुमायूं को दिया था और बाबर ने लिखा है कि एक जौहरी ने इसकी कीमत पूरी दुनिया के आधे दिन के खर्च के बराबर लगाई थी। बाबर ने फ़ौरन इस कीमती तोहफे को लेने से इनकार कर दिया और ये उसको पेश किया जो ये हीरा उसको देना चाहता था, यानी हुमायूं को। We have read and translated the lesson. Now we'll do the vocabulary and sentences. Now we'll do the vocabulary. Unit 2, War and Peace. Topic, the Battle of Panipat, 1526. Activity, vocabulary plus sentences. Words, English meanings, Urdu meanings and sentences. Subdue, to bring under control. Zere tasallut karna. If soldiers subdue a group of people, they defeat them by using force. Subjugate, to conquer, fatah karna. The manager tried to subjugate the employees into working late by threatening to fire them. Strategist, the person who is skilled in planning. Mansuba Saz, he was a better soldier than strategist. Matchlock,
A gun fired by a lightened match. Todedar banduk. 12 men were all occupied, having each his matchlock. Cavalry. Soldiers who fight on horseback. Ghor Sawar Sipahi. He was once an officer in the cavalry. Exasperated. Irritated, angry, गुस्से में. I was exasperated by all the noises. Assault, attack, hamla. He was guilty of assault and betray. Stampede, sudden rush of frightened animals. Bhagdad. Several deer were killed in the stampede. Decapitated. Behead, cut off head. Sar kalam karna. Many people were decapitated during the war. Pillage, shooting, looting, especially in war. Lootmar. There was no sign of violence in or pillage. Talented, gifted, basalahiyat. She is a talented artist. Harass, to upset someone. Harasa karna. He claims that he was unfairly harassed by police. Incite, to move into action, provoke. Bhadkana. We come for peace. We don't want to incite any kind of violence. Archer, a person who shoots with bow and arrow. Tir andaz. The archer attempts to hit the ball as many times as possible. Conqueror, soldiers and people who fight in wars and win. Fateh, Akbar was a fearless conqueror. Expenditure, the act of spending money. Ikhrajat, we must try and limit our expenditures. We have completed our vocabulary in sentences. Now write down the vocabulary on your notebook and learn by heart.